Hello dear students. Today we start our first lesson, Kingdom Animalia. In this lesson we have to study the classification of animals. How the animals are classified into different category. Okay. So open your book and see the page number 29. Okay. So have you observed the animals around you? Do all the animals look alike? No. All the animals which are not alike, they do not show the similarity. They differ from each other in various characters. Okay. So the animals, particularly these animals, are these eukaryotic multicellular heterotrophs. These animals are these eukaryotic multicellular, means these animals which are made up by these multicells, and these animals are these eukaryotic. Eukaryotes means what? These cells which have this true nucleus. Those animal cells which have the true nucleus, they show this proper nucleus and nucleolus, that animals are these eukaryotic animals. These animals are capable of this locomotion and movements. Okay, they are capable of locomotion or body movements. With the help of these body parts, they can locomote from one place to this another place. Also, these animals show this nervous system and specialized sense organs also. उनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती है, उनमें स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. दिस सेंस ऑर्गन्स विच आर हेल्प फॉर दिस कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड वहाँ पे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. They have this reproductive system and the animals reproduce sexually by the formation of this gametes. Okay. So the animals are broadly classified into two categories, chordates and non-chordates. The animals are classified into two types, chordates and non-chordates. So this division is based on the presence और absence of the notochord. ये जो डिवीजन है एनिमल्स की, जो क्लासिफाइड हुए हैं दो कैटेगरी में, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में. सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस नोटोकॉर्ड. सो व्हाट इज द नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज़ ए स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर made up of the packed vacuolated cells which are present in the midline portion of the body. एनिमल बॉडी के बीच में यानी मिडलाइन पोर्शन में एक स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो वैक्यूलेटेड सेल से बना होता है, उस स्ट्रक्चर को बोला गया है नोटोकॉर्ड. The notochord is a stiff rod-like structures which are present in the midline portion of the animal body. So depending on the presence or absence of this notochord, these animals are classified into two types, chordates and non-chordates. So first of all we see this non-chordate. Non-chordate means what? Those animals do not show this notochord. That animals are called as this non-chordates. Non means no notochord. Okay, जिस animals में notochord present नहीं होता, वो animals किस में आते हैं? Non-chordates में. That animals are called as this non-chordates. The animals which do not show this notochord, that animals are called as this non-chordates. And another, the chordates means what? Those animals show the notochord. Okay, in the midline portion of their body they show this notochord, that animals called as this chordates. Okay, so understand,
What is the non-chordate and what is the chordate? Notochord means absence of non-chordate means what? Absence of notochord, and chordate means presence of notochord. Okay. So this non-chordate particularly show this ganglionated nerve cord and gill slits on the pharyngeal region. जो नॉन कॉर्डेट जो है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? दे शो दिस nerve cord which is help for the nervous coordination, and they have this gill slits on this pharyngeal region. जो pharynx का region होता है, ओके, माउथ के नीचे का जो पोर्शन होता है उसको अपन फेरिंग्स बोलते हैं. सो वो जो फेरेंजियल रीजन है उसमें कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, उसको गिल स्लिट्स बोला जाता है. एंड दैट विद द हेल्प ऑफ दिस गिल स्लिट्स दे कैन रिस्पायर. ओके, रेस्पिरेशन विच आर टेक्स प्लेस बाय दिस गिल स्लिट्स. सो दिस गिल स्लिट्स एंड nerve cord which are present in this non-chordates, but they don't have this notochord. Okay. So these animals show the presence of notochord throughout the life. At some stage of this embryonic development are called as this chordates. Means chordates show this notochord, but these notochord are present only in this embryonic development. ये जो नोटोकॉर्ड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, दिस नोटोकॉर्ड विच आर प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग दिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. यू नो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे एम्ब्रियो बढ़ रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, सिर्फ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट तक ही वहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, एंड दे स्लग ऑफ. ओके, यानी मतलब फिर वो बाद में यानी मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, and this embryo are developed into this their another stage. Okay, so now these there are about million animals, 1.2 million animal species which show this great diversity. Means each animals which are differ from each other, okay, in various characters, like their habit, like their external structure, their habit, their habitat, then their level of organization, body plan, symmetry, body cavity, germ layers, mode of their locomotion, mode of their respiration, mode of their excretion, and mode of their reproduction. So through from these characters these animals are differ from each other. ये सभी characters में animals एक दूसरे से differ है, and on the basis of these characters, okay, on the basis of this character, these animals are classified into this different phyla also. Okay, सो सम क्राइटेरिया यूज्ड फॉर दिस एनिमल क्लासिफिकेशन. यहाँ पे कुछ ऐसे क्राइटेरिया दिया हुआ है, कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है. ओके, सो देयर आर दिस ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, then cell to tissue organ, body symmetry, asymmetry, radial symmetry, then bilateral symmetry, body cavity, acoelomate, pseudocoelomate, coelomate, germ layers, that is this diploblastic, triploblastic, and segmentation, unsegmented and segmented. So these are all these characters. ये जो क्या है, ये characters है. इस कैरेक्टर्स के वजह से एनिमल्स को एक दूसरे से क्लासिफाई किया गया है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दिस नंबर ऑफ जर्म लेयर्स. मीन्स यू कैन सी हियर जर्म लेयर्स. ओके, यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया हुआ है जर्म लेयर्स. पहले कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते हैं. ओके, सो इन्हें दिया नहीं है पर्टिकुलरली जर्म लेयर्स की, यहाँ पे ऐसे कुछ दिया नहीं है, तो उसके नोट्स में आपको भेज दूँगी. तो ये जो जर्म लेयर्स है, ओके, सो जर्म लेयर्स मीन्स व्हाट, every multicellular organisms which are made up by this single cell. Okay, every multicellular organisms किससे बना हुआ है, सिंगल सेल, and that single cell is called as this zygote. The first cell of this human body, okay, yeah, the first cells of this animal body which is called as this zygote. And this zygote undergoes this division. The zygote undergoes this so many mitotic and meiotic divisions, and they form this
whole body structure. So the zygote divide and redivide and they form the such a mass of cells. बराबर है, यानी मतलब single cells which form this number of cells. Like this single cell zygote is divided into two cells, then these two cells form this four cells form this 8 cell form the 16 cells in this way, and they form this such a group of cells, they form the mass of cells. Now these cells, this mass of cells will arrange, okay, these cells get arranged into 2 or 3 layers, and that layers are called as this germ layers. It is also called as this germinal layers. okay, इसको germinal layers भी बोला जाता है या germ layers भी बोला जाता है. जो ग्रुप ऑफ सेल्स वहाँ पे फॉर्म हुए हैं सिंगल सेल से, वो ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अरेंज्ड हुए हैं इन 2 or 3 लेयर्स. सो डिपेंडिंग ऑन दिस layers, okay, depending on this number of these layers, these animals are classified. okay, so those animals which show only these 2 layers, those animals which show only these 2 germinal layers, that are called as this diploblastic animals. जो एनिमल्स सिर्फ 2 ही जर्मिनल लेयर्स शो कर रहे हैं, एंड दैट जर्मिनल लेयर्स आर आउटर इक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म. ओके, आउटर इक्टोडर्म है, वहाँ पे 2 ही लेयर प्रेजेंट है, एक आउटर है और एक इनर है. तो जो आउटर जो है वो इक्टोडर्म है, इक्टो मीन्स आउटर, ओके, एंड एंडो मीन्स इनर. सो आउटर लेयर जो है उसको इक्टोडर्म बोला जाता है और इनर जो है उसको एंडोडर्म बोला जाता है. सो दोज एनिमल्स शो ओनली दिस 2 लेयर्स, 2 germinal layers, ectoderm and endoderm, that animals called as this diploblastic animals. And those animals, okay, and that diploblastic animals are this member of phylum Cnidaria. okay, Cnidaria, it is this second phylum of this non-chordates. तो निडेरिया के जितने भी मेंबर्स है या एनिमल्स है जो फाइलम निडेरिया में आते हैं, all these animals are this diploblastic animals. They show only these 2 layers, ectoderm and endoderm. So again is this triploblastic animals. okay, diploblastic animals and triploblastic animals. So triplo means tri means 3. okay, means those animals show this 3 layers. जो animals 3 layers show करता है, that animals called as this triploblastic animals. And that layers are outer ectoderm, okay, middle mesoderm and inner endoderm. जो बाहर की जो लेयर है उसको इक्टोडर्म बोला जाता है, और इक्टोर इंडोडर्म के बीच में जो एक लेयर है उसको मेसोडर्म बोला जाता है. मेसोडर्म में व्हाट, मिडल लेयर. ओके, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ऐसे उसमें 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. देयर आर 3 जर्मिनल लेयर्स आर प्रेजेंट, एंड दोज एनिमल्स शो दिस 3 layers, 3 germinal layers, that animals are called as this triploblastic animals. Diploblastic animals and triploblastic animals, and these members of this phylum Platyhelminthes. okay, Platyhelminthes के जो भी एनिमल्स हैं, यानी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में जितने भी एनिमल्स आते हैं, all these animals are this triploblastic animals. means they show this, means they are now well evolved animals फ्रॉम दिस डिप्लोब्लास्टिक. यानी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स से थोड़े यहाँ पे इवॉल्व हो गए हैं ये एनिमल्स, एंड दे शो दिस 3 layers ऑफ germ layers. okay, they show this 3 layers, and that's why they are called as this 3 germinal layers. okay, so on the basis of this number of germ layers, these animals are classified into 2 categories, diploblastic animals and triploblastic. Diplo means 2, having this 2 layers, ectoderm and endoderm, and triploblastic means having these 3 layers, ectoderm, endoderm and mesoderm. Ectoderm is this outer layer, mesoderm is this middle layer, and endoderm is this inner layer. okay, आज के लिए ही इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनिमल बॉडी प्लान. ओके.